Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next chapter. In fact, today we are going to start the chapter number 6. हमने एक chapter complete कर लिया. Now we are moving towards the next chapter, which is chapter number 6. And today is the introduction of the chapter number 6 of your book, which is the chemical bonds. So, what a chemical bond is? A chemical bond is the force which holds together the two or more atoms or ions to form the large variety of the compounds. बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एटम और आइंस को आपस में रखने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड वो बेसिकली फोर्स कंसिडर होती है. Forces which are responsible for such bonding and the shapes of the molecule formed are as a result of the chemical combination. वो फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस तरह की बॉन्डिंग्स की और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की जो कि बनती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, इन सबको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं. द थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री. जो थ्योरी है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की, ये एक मॉडर्न केमिस्ट्री का एक इशू जो है वो मेन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है. In this chapter, we shall look into the nature of the chemical bond formed between the atoms. Causes of the chemical combinations. This can come in your short question that what are the causes of the chemical combination? Chemical combination के main causes क्या हैं? So it has been observed that the chemical reactivities of elements depend upon their characteristics electronic configuration. जो केमिकल रिएक्टिविटीज हैं, एक केमिकल रिएक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उनके करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर. उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इस चीज पे डिपेंड करती है. द नोबल गैसेस विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल 1s2 हीलियम, NH2, NP6 for neon, argon, krypton, etc. show the little tendency to react chemically. तो जो हमारी नोबल फ्रॉम मोस्ट लेफ्ट टू मोस्ट राइट की तरफ जाते हुए जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं. जो मोस्ट राइट पोजीशन पे हमारे पास पूरा एक ग्रुप आता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट पूरा होता है. जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो उसका यह मतलब होता है कि वो अब फर्दर आगे रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है इनकी हीलियम की, नियॉन की, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन दैट नोन एज अ नोबेल गैसेस और नोबल गैसेस, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इनकी जो टेंडेंसी है टू रिएक्ट केमिकली इज वेरी लो. देयर आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म बाय दीज एलिमेंट्स. सिर्फ कुछ स्टेबल कंपाउंड है जो इससे बन सकते हैं, जैसे xenon fluoride, ZeF4, ZeOF2, ZeO3. ये सिर्फ कुछ स्टेबल कंपाउंड्स हैं जो इनको रिएक्ट करवाने के बाद बनाए जा सकते हैं. अ नोबल गैस डज नॉट रिएक्ट विद अनदर नोबल गैस. ऐसा नहीं है कि हीलियम और नियॉन आपस में रिएक्ट कर सकें. इन ये दोनों की दोनों नोबल गैसेज हैं, सो बोथ कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर. दीज गैसेज आर द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स. जो 118 एलिमेंट हमारे पास इस टाइम मौजूद है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो ये नोबल गैसेज हैं, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आता है. लेट अस सी व्हाई नोबल गैसेज आर द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, अब नोबल गैसेज सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे वी कैन जस्टिफाई दिस पॉइंट. द आउटर मोस्ट एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. इनके जो आउटर मोस्ट एस और पी ऑर्बिटल्स हैं ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. जैसे कि 1s हीलियम का है. ठीक है, हीलियम का 1s जो हमारे पास शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. इसी तरह से जो नियॉन है, नाउ नियॉन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपके सामने. इसके 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. इसी तरह से 2px, 2py, 2p 2s, 2py, 2px एंड 2pz के अंदर भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीटली कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से ये रिएक्टिव हो सके. एज द आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं. इसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी रिएक्टिविटी है वो जीरो है, या इनकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर शेल जो है वो जीरो है. नाउ व्हाट इज बेसिकली ऑक्टेट रूल?
All the elements combine with one another due to the inherent tendency to stabilize themselves. खुद को stabilize करने के लिए basically तमाम elements combine करते हैं एक दूसरे के साथ. They get their stabilization by losing. वो stabilization लेते हैं by losing, gaining, sharing electrons to attain the nearest noble gas configuration. जो सबसे करीब वाला हमारे पास नोबल गैस मौजूद है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्यों अटेन करना है, ताकि स्टेबल हो सके. फॉर द स्टेबलाइजेशन और नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए जो एक एलिमेंट है वो लूज करता है, गेन करता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. जो टेंडेंसी है एक एटम्स की टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल. इसे हम ऑक्टेट रूल का नेम देते हैं. Now I'm generating a poll. Answer this poll in next 30 seconds. I'm ending the poll now. Okay, so for the clarification of the concept of the octet rule, I'm going to show you a video. The octet rule is a very general rule that allows us to predict how atoms will form chemical bonds to make molecules. It's used extensively in drawing Lewis structures. When elements have 8 electrons in their outer shell, they have an octet. The octet rule is based on observations of how atoms behave in the real world. It's a general rule, and there are numerous exceptions, but it works very well for some of the most common elements that we deal with in science. So how does the octet rule work? Let's look at hydrogen and chlorine and see how they bond to form HCl, hydrochloric acid. Since both are nonmetals, they share electrons and form a covalent bond. Chlorine has 7 valence electrons in its highest energy level, sometimes called the outer shell. To obtain an octet, it needs an additional electron. Hydrogen has 1 valence electron. Hydrogen is an important exception to the octet rule. Hydrogen only needs 2 valence electrons to have a full outer shell. Instead of an octet, think of it as a duet. A covalent bond is formed when the hydrogen comes together with the chlorine and forms a chemical bond by sharing valence electrons. The hydrogen, which only had 1, by sharing now has 2. And you remember that hydrogen only needs 2 to fill its highest energy level. The chlorine had 7, but by sharing with the hydrogen, it now has 8. That's a full outer shell for chlorine, and it's called an octet. But what if we had 2 hydrogen atoms bonding? For hydrogen, which only needs 2 valence electrons to have a full outer shell, the hydrogen would join with another hydrogen to form a chemical bond, and now both hydrogens would have 2 valence electrons in their highest energy level. If we had 2 chlorine atoms coming together, they have 7 in their outer shell right now, but when they come together and they form a chemical bond there, they now both have 8 in their outer shell, an octet, by sharing valence electrons. Back to our HCl molecule. Hydrogen and chlorine normally exist as H2 and Cl2 in the real world. So this is a bit of an oversimplification, but it's how we think about the bond between the H and the Cl forming to make HCl. To recap, the octet rule works well for many of the molecules we use in science, especially biology. But be careful, hydrogen only needs 2 to have a full outer shell. For ionic compounds, it's a little bit different. Here we have a sodium and a chlorine atom.
The sodium's a metal and the chlorine's a nonmetal. That means it's going to be an ionic compound. Ionic compounds don't share valence electrons. They transfer them. So in this case, the sodium is going to lose its valence electron to the chlorine. The chlorine had 7, now it has 8 in octet. Now when we look at the sodium, it doesn't have anything in that outer shell. In fact, that outer shell goes away. And underneath it are 8 valence electrons in that new outer shell. So it has an octet. The sodium, it lost an electron. It lost a negative charge. It's going to be positive. The chlorine gained an electron, and electrons are negative. Therefore, the chlorine is going to have a negative charge. And because of that, these two atoms are going to be attracted to each other, and that is how the chemical bond forms in an ionic compound. Often we'll put brackets around the chlorine and a negative sign and then a positive sign on the sodium to show that they're attracted and they have formed this ionic bond. A word of caution, NaCl is considered a formula unit of a larger crystalline structure. It doesn't really exist by itself, but the idea of the octet rule still holds in this lattice structure. When we draw Lewis structures to describe the arrangement of atoms and molecules, the octet rule is a very useful guide. But just remember, it's only a guide. There are many exceptions, like hydrogen, and it doesn't always work for all elements. An octet isn't the only reason atoms bond. Electrostatic attraction between atoms is important to consider, as well as the energy changes involved when the bonds form. But the octet rule is a useful guide in predicting how atoms bond, and it mostly matches how the main group elements form chemical bonds in the real world. Finally, atoms form bonds to minimize energy and become Okay, so that was an octet rule. In certain case, बहुत सारे cases में बहुत जो tendencies हैं to lose or gain electrons have been observed, but the system will go by the conditions and with the chemical combination take place. इसकी एग्जाम्पल के लिए chemical combination between the sodium and hydrogen to form the sodium hydrate NaH. Hydrogen atom gain an electron. In the formation of HF hydrogen fluoride, fluoride की electronegativity हमें बताया 9 है. It is the most reactive. जो हाइड्रोजन की है वो कम है. The hydrogen atom donate करता है major share of its electron to the fluorine. क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है 4 है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों चीजें हाइड्रोजन से ज्यादा हैं टू शेयर और टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसलिए इन केस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड, जो हाइड्रोजन है वो मैक्सिमम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और जो फ्लोरीन है वो गेन करता है. एनी हाउ द ऑक्टेट रूल कुड नॉट बी मेड यूनिवर्सल एट द फॉर्मेशन ऑफ PF5 SF6 BCl3 are not according to this rule. ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल रूल इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जो चंद कंपाउंड है जैसे PF5 है, CF6 है, BCl3 है, ये इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है. हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं लिथियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन एंड सल्फर. टेंडेंसी क्या है लिथियम मैग्नीशियम लिथियम की, दैट इज इलेक्ट्रॉन लॉस. इट कैन इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन. वाइल मैग्नीशियम की क्या है इलेक्ट्रॉन लॉस. फ्लोरीन के क्या है कि इट कैन इजीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. सल्फर की क्या, इट कैन इजीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिफोर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, आफ्टर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. जो हमारे पास लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s1 1s2 2s1 है. ठीक है, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बची है 1s2. क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, इट विल बी इजी फॉर लिथियम टू ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रॉन. और कौन से नोबल गैस की हमने अभी बात की थी कि आफ्टर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है. तो लिथियम अटेन करता है हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. इसी तरह से मैग्नीशियम है, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन है बाय गेनिंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में इसकी 2pz1 होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अटेन करके ये क्या करता है, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है. और इसी तरह से जो सल्फर है
वो आर्गॉन यानी 18 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है. The energetics of the bond formation according to the modern theory of the chemical bond. But before this, I'm going to generate a poll. Okay, I'm ending the poll now. So according to the modern theory of the chemical bonding की modern theory के according जो atoms हैं वो बनाते हैं bond as it leads to decrease in the energy. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ऑपरेट होती हैं साइमल्टेनियसली. दोनों फोर्सेस एक साथ जो है वो डेवलप होती हैं. जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो टेंड करती हैं टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर. दो एटम्स एक दूसरे के करीब लाने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करती है. एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज. तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम की डिक्रीज करती है. ऑन अदर हैंड जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो टेंड टू पुश द एटम्स अपार्ट फ्रॉम एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज. जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है एक सिस्टम की वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी. लेकिन जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो डिक्रीज करेगी. So it has been found that the magnitude of the potential energy for the attractive force is more than that of for the repulsive force. तो जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस. वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए कम है. देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एज द टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर. इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है एज दो हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को. तो क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है. नाउ लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन वन. जब ये दोनों अप्रोच करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, डी फॉर डोमिनेट. जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ये बात की है हमने. अच्छा, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे. केमिकल बॉन्ड बनता ही तब है, लेट मी राइट दिस ऑन योर व्हाइट बोर्ड. केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड की फॉर्मेशन होती तब है जब फोर्स अट्रैक्शन डोमिनेंट हो या ज्यादा हो एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्जन. अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन डोमिनेंट कर जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है. लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकेगी. इसका मतलब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो डिक्रीज करेगा. क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करी होगी. अगर पोटेंशियल सिस्टम ऑफ एन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो इंक्रीज करता है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो डोमिनेंट हो गया. नाउ दिस इज द एनर्जेटिक डायग्राम व्हिच इज आल्सो इंक्लूड इन योर सिलेबस. ये है हाइड्रोजन. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली हाइड्रोजन.
This side represent your potential energy of a system, and this side represent the intermolecular distance between the two atoms in a molecule. So the energy increase due to the repulsion between the nuclei. एनर्जी कब इंक्रीज होगा? क्योंकि रिपल्जन ज्यादा होगा न्यूक्लियाई के बीच. एनर्जी विल बी लोअर ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी लोअर हो गया और लोअर होगा. इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम. इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम कितना है? 75.4 पिकोमीटर है. कितनी एनर्जी है? 436 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी हमारे पास. हाइड्रोजन एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे डोमिनेंट है, और हाइड्रोजन एटम जो मैक्सिमम एक दूसरे के करीब है, तो उनके बीच बॉन्ड डिस्टेंस कितना है? 75.4. जैसे जैसे दो हाइड्रोजन एटम के बीच रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होती जाएगी, जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज रिपल्जन फोर्स डोमिनेट करें. जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन डिक्रीज करेगी. हाइड्रोजन एटम उतने करीब आते जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और डिस्टेंस 75.4 होगा, और जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी. Now, energetics of bond formation. Eventually, a state corresponding to the distance of 75.4 picometer is reached. Eventually, जो state जो है वो distance of 75.4 picometer हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्कशन हो रही है, रीच होगा, वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस. इधर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट हो जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो मिनिमम हो जाएगा. हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड होंगे टू अ स्टेबल मॉलिक्यूल. जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बना के स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे. इस डिस्टेंस को हम 75.4 पिकोमीटर का नाम दे रहे हैं. बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है, or the compromised distance of two hydrogen atom. Now the bond length, bond distance and compromised distance of two compromised distance is the same term for the three basic definitions. तो जो बॉन्ड लेंथ है, जो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस है, या जो बॉन्ड डिस्टेंस है, ये तीनों एक ही चीज के हमारे पास नेम है, और जो हाइड्रोजन का कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर है. Energetics of the bond formation. When the atoms approach the distance of minimum energy, जब एक एटम मिनिमम एनर्जी के डिस्टेंस को रीच कर जाता है, जो सिस्टम है दो हाइड्रोजन एटम का वो स्टेबल हो जाता है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है, यानी बाहर मूव कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है, वो है 436.45 किलो जॉल पर मोल फॉर द हाइड्रोजन एटम, एंड इज कॉल्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. ये जो 436.45 किलो जॉल पर मोल फॉर द हाइड्रोजन एटम हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आई है, ये है दो हाइड्रोजन के मिलके हाइड्रोजन का जो H2 का मॉलिक्यूल बना है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर हमने ब्रेक करना है इस बॉन्ड को, यानी दो हाइड्रोजन को H2 को H के अंदर कन्वर्ट करना है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी टू प्रोवाइड टू ब्रेक दैट बॉन्ड. नाउ आई एम जनरेटिंग अ पोल.
Okay. So before this, I'm going to show you a video on the bond energetics of the hydrogen atom or the molecule. Just a Actually, the video which I want to show you on this platform is not working in the vivid classes. So it's okay. हम लोग इसको जो है वो अपने तरीके से रिवाइज कर लेते हैं. It's okay. अच्छा, for the case where the repulsive forces हमारी dominate करती हैं, then the attractive forces, the energy of the system increase and it leads to instability. अगर कोई ऐसी condition हमारे पास आ जाए जिसके अंदर repulsive forces, force of repulsion जो है वो डोमिनेट कर जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जो एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज कर जाएगी. कौन सी एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी. और इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी और ओवरऑल मॉलिक्यूल इनस्टेबल हो जाएगा. बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड और एट द एंड रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा कि बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी. Consequently, a bond is not formed. In order to understand the bonding, the relative size of atom should be known. Basically, हमें relative size of an atom पता होना चाहिए before the study of the bonding. The relative size of an atom is trend in periodic table we will study in our next lecture. If you have any question related to this, you can ask me. I'm generating a poll. I'm ending the poll now. Good day, learners. This is engineering. This time we're going to talk about types of chemical bonding. Have you tried pulling a piece of paper apart until it tears off? Or have you tried pulling a steel bar until it breaks off? The paper was torn off because your force was way too larger than the strength of the particles of the paper to hold on to each other. But you did not ever break a steel bar because your force was way too smaller than the strength of the particles of a steel bar to hold on to each other. In chemistry, these particles are composed of atoms, and these atoms are bonded with the other atoms through sharing or exchanging of electrons.
Basically, chemical bonding is the attraction between atoms. Ions are molecules that enables the formation of chemical compounds. There are three common types of chemical bonding. These are ionic bonding, covalent bonding, and metallic bonding. Let us discuss the types of bonding one by one. To start with, ionic bonding. Ionic bonding occurs between metal and non-metal atoms. It involves a transfer of valence electrons from metal atom to non-metal atom, which then both atoms become stable. Each atom bearing a positive or negative charge is called ion. Because of the transfer of electrons, the metal atom have a net positive charge and the non-metal atom have a net negative charge. The ion that carries a positive charge is called cation, while the ion that carries a negative charge is called anion. Basically, ionic compounds have high boiling and melting points, and mostly they form as crystals. They can conduct electricity if they are dissolved in water and exist as ions. Lastly, they are brittle and easily broken down into small pieces. The second type of bonding, the covalent bonding. Covalent bonding occurs between non-metal and non-metal atoms. It involves a sharing of valence electrons between non-metal atoms for them to become stable. Hydrogen, oxygen, chlorine, and many others exist as diatomic molecules, which means that there are two atoms of hydrogen, oxygen, and chlorine for them to exist. The oxygen atom is covalently bonded with another oxygen atom. The same with other diatomic molecules. In chemistry, the term molecule refers to the covalently bonded groups of atoms. Molecular covalent substances are mostly liquid and gases because the molecules have more freedom to move within the substance. Also, covalent compounds have low melting points and boiling points. So the third type of bonding, metallic bonding. It occurs between metal atoms. Metal atoms achieve a stable form by sharing its outer shell electrons with other metal atoms. The valence electrons of each metal atom are not tightly bound in the nucleus, so each metal contributes all the electrons in its valence shell to other metal atoms in the structure. It may describe as the sharing of free electrons among the structure, or sometimes the electrons are called as delocalized electrons. Delocalized electrons mean that it is not associated with any single atom. The electrons then form a sort of sea of electrons within the structure, which is why metal is a good conductor of electricity because the electrons move freely between atoms. Hence, current flows. Metallic bonding is also the reason of other physical properties of metals, such as ductility, thermal and electrical conductivity, and many other. So that's it. That is all for now. I hope you learned something today. Once again, this is Easy Engineering. Okay, so that was a types of the chemical bonding जो कि ये energetics of bond formation को इस्तेमाल करते हुए जो four types की bonding हम कर सकते हैं, the ionic covalent, coordinate covalent and the metallic bonding, उसका introduction था. We will cover that part in our next lecture, which is tomorrow. uh, for now, this is our topic, basically the introduction of the chemical bond and the energetics of the bond formation. If you have any question related to this, you can ask me next 1 minute. If not, then we will start our next class. Okay, so let's just revise our today's lecture, which is on the chemical bond formation introduction. So what is a chemical bond? A chemical bond is a force which hold together two or more atoms or ions to form the large variety of the compound. Forces which are responsible for such bonding and shapes of the molecule formed are as a result of the chemical combination. Theory of the chemical bonding has been a major problem of the modern chemistry.
Causes of the chemical combination. So it has been observed that chemical reactivities of element depend upon their characteristic electronic configuration. The noble gases with the electronic configuration of valence shell, helium, neon, argon, krypton, xenon show the little tendency to react chemically. Why they show the little tendency is because of their complete octet shell. They are just only few stable compound जैसे जो noble gases हैं उनसे बहुत कम stable compound बनते हैं जैसे Ze, XeF2, XeF4, XeOF2, and XeO3. A noble gas does not react with another noble gas, thus these gases are the most stable of all the elements. अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी जैसे हीलियम है व्हाई हीलियम इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट फॉलोज द डुप्लेट रूल इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल इसी तरह से नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में दो होते हैं 2s नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है. All other elements combined with one another due to an inherent tendency to stabilize themselves. They get this stabilization by losing, gaining, sharing electron to attain the nearest noble gas configuration. So the tendency of an atom to attain a maximum of their 8 electron valence shell is known as the octet rule. By but the system will go by the condition in which the chemical bond combination take place. For example, chemical combination of the sodium and hydrogen. In the case of the bond formation of sodium hydrogen, जब सोडियम हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जो हाइड्रोजन एटम है वो गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन एटम. और लेकिन जब हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जो फ्लोरीन है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है टेंडेंसी है वो हाई होगी. सो इन द केस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट एंड इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली हमने इसको एक डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन किया है इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स एंड अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. अगर तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो डोमिनेट कर जाए और वो एक दूसरे से दूर होते जाएं तो उनका जो डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर वो इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली जो एनर्जी है पूरे ओवरऑल सिस्टम की वो भी इंक्रीज होगी जिसकी अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो डोमिनेट हो रही है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाए तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम वो भी डिक्रीज करता है. अगर वो डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज करेगी. पोटेंशियल हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल जो रिएक्टिविटी है हमारे दो हाइड्रोजन एटम्स की वो इंक्रीज करेगी. वो दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे. तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो एनर्जी है ओवरऑल पोटेंशियल सिस्टम की वो डिक्रीज करेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्जन. लेकिन अगर किसी केस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की तो जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड इट लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी. So, as a result, bond बनेगा ही नहीं और in order to understand the bonding, relative size of the atom should be known. जो relative size है एक atom का वो हमें जरूर पता होना चाहिए. So that's it. If you have any question related to this, you can ask me next 1 minute. If not, then you can ask me in the first 5 minutes of the next lecture. Okay. Thank you and Allah Hafiz.